Hello everyone and welcome to the brand new episode of today we have Ankur Sir and he's one of our alum from IIM Mumbai. He's just handling a big position, CEO of Invincio and Ankur Sir, I welcome you in this episode of how to thrive into business world actually. Moving further, I would like to know what your thoughts on overwork versus hard work. And have you ever faced any uh, situation where you have to identify whether it is overwork or it's hard work and what's important uh, to guide somebody to go more with hard work at the same point of time? We should also be focused on that. No, this is overwork, so don't do that part. Stick with your hard work part. And hard work will get you there. How have you ever identified something similar to that? How do you see in terms of overwork and hard work? So, Anand, I would like to just correct a bit of it. It's more of hard work and smart work because hard work is generally overwork only because all hardworking people are overworked always क्योंकि वो कर्मठ होते हैं. Uh, so, Anand, you couldn't have asked me a better question because in the penultimate tenure of my in the armed forces, I was there as a second in command of the battalion for 4 years, and it's a long time, 4 years. And we were moving with the battalion. Our battalion was part of the strike. When I say strike means कि अगर कुछ होता है तो सबसे पहले we were supposed to go. तो हमारे प्लान्स वगैरह रोज चेंज होते थे, प्रैक्टिस होती, ड्रिल्स होती थी, ये वो 2 बार अमरनाथ यात्रा हुई, सब कुछ हुआ. एंड टू माई not to my surprise actually, but the youngster line was too long, or somebody whom we could entrust and give the responsibilities independently at senior level, we did not have anybody. So that again put me in a zone where I had to do, I had to take care of multiple things because it is your person's men's life at stake, material ki security at stake, a lot of, and national image at stake. There are a lot of things which are tied up, which at out बाहर से ज़्यादा लगता नहीं है, but अंदर से actually even a battalion's wrong move sometimes it affects national policies. It happens if you are there in a critical and sensitive location. Coming back to Philips, again the same thing. When I joined, there were only 3 people in our team. Me, the president. I was the vice president, and we had two more people, rather 4. And slowly they left because we started getting projects. Now it was a good problem to solve, but obviously काम बढ़ रहा था. So I remember for 3 months I had only I hired an intern, and God bless her because that intern did marvelously well. I'm a good groomer, I'm a good trainer, so I wanted to invest a lot of energy in her. We invested, and she's amazing, and she reciprocated. You being a trainer doesn't really matter that the person will also reciprocate. So we had multiple projects, Qatar running, Malaysia running. Malaysia वालों की सुबह जल्दी जाती है, 2.5 घंटे आगे हैं. Qatar वालों की बाद में होती है. तो de facto what was happening, and I was hiring. So we were hiring like 50-60 trainers, and all those people we had to hire. और मेरे पास talent acquisition के लिए shared services थी, but they had their hands full. तो मैं खुद ही रिज्यूमे पोस्ट डालता था, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करता था. उसके बाद सुबह उनको 7 बजे से लेके, मतलब कभी वॉक करते करते मैं इंटरव्यू कर लेता था, गाड़ी में जाते हुए इंटरव्यू करता था, रात को वापस आके कभी थोड़ा सा बीच में लल इन द बैटल हुआ तो इंटरव्यू करता था. एंड इट वाज अगेन, सो आई रियलाइज ये तो आई जस्ट बर्न आउट. इट विल हैपन इवेंचुअली, इफ यू कीप वर्किंग हार्ड तो आप उतना डिलीवरी भी नहीं दे पाओगे और आप यू विल बर्न आउट. इसका सबसे आसान तरीका है कि एक इनाम फोर्सेस आल्सो वी से कि रेट्रोगेट ऑप्स, थोड़ा पिवट करो अपने आप को, जस्ट टेक अ स्टेप बैक. अभी क्या होता है, हम सुबह उठते हैं, शाम को घर वापस आते हैं, रोज गाली देते हुए जाते हैं, गाली देते हुए आते हैं कि आज पूरा दिन ये करना पड़ गया, और हमारे पास कोई दिखाने के लिए नहीं होता कि पूरे दिन हमने किया क्या. वो नीलबटे सन्नाटा, LHS इक्वल टू RHS हो जाता है. उसके बाद बोलते हैं ठीक है, महीने की पहली तारीख सैलरी आती है, 10 तारीख के बाद हम उसको बजट कटिंग शुरू करते हैं. बाय द टाइम इट इज 20th वी स्टार्ट लुकिंग एट 30th. एंड दिस इज not a growth mindset. This is more of a stagnant mindset, I'll say. And like you mentioned earlier, I started learning about things. You see, my hashtag on all these platforms, which I've started very ardently popularizing now, is L to L. Learn to live to learn. You see, there is a difference between us and animals. Animals learn to survive. आपके घर में पेट होगा, 2 टाइम का खाना दो, खुश है. खाना नहीं दोगे, काटेगा या भौंकेगा, या जो भी है, कैट है, डॉग है आपके पास, या कोई और पेट है. वी कैनॉट बी सेटिस्फाइड.
सो आई एम रियली सरप्राइज कि हाउ कैन यू गो इन द मॉर्निंग थिंकिंग यार आज तो पूरा दिन है, बॉस से चार गाली सुनेंगे, किसी को चार गाली देंगे, शाम को वापस आ जाएंगे, एंड देन दिस इज नॉट, यू आर नॉट लर्निंग एनीथिंग, ओनली यू आर जस्ट सर्वाइविंग. तो सर्वाइवल मोड से जब तक आप लर्निंग मोड में नहीं आओगे, आप हमेशा हार्डवर्क ही करते रहोगे, एंड यू विल ऑलवेज फाइंड दैट यू आर इन अ, यू विल ऑलवेज बी इन अ ग्रे एरिया. ना ये पसंद आ रहा है ना वो अच्छा लग रहा है. तो ना देयर लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बीच में त्रिशंकु की तरह आप हमेशा लटके रहोगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कहाँ जाना है. सो उसके लिए मेरे पास दो तीन पॉइंटर्स हैं. सबसे पहले, start writing. Writing is a very good habit. You must, if you have to, I should know what I am good or bad at, तभी तो मैं उसको improve कर सकता हूँ. मुझे पता ही नहीं है कि मैं किसमें अच्छा या किसमें बुरा हूँ, तो मैं तो वैसे ही चली जा रहा हूँ. जिन चीजों के लिए गालियां खाता आ रहा हूँ खाता रहूंगा, और जिन चीजों के लिए शाबाशी लेता रहा हूँ शाबाशी लेता रहूंगा. What happens is that in any environment, in any profession, people have to see value in you. They don't have to see Ankur Sabharwal. They see there is a person who can be entrusted with whatever is coming our way. Till last year, I was entrusted with, matlab, I could hire somebody with 15, 20, 25 ka package. I could write off $2,000, 3,000 ke bills, or approve them rather, not write down. No, I never imagined in my life I'll have that kind of power. To be honest with you, Anand, because in armed forces we hire as a GTO, but I don't decide their pay scales and all. But when I started learning, so I'll give you one small example. So when I reached in Philips, I saw that there was advanced manufacturing thing, and I was totally zero about advanced manufacturing. मुझे पता था 3D printer नाम की एक चीज होती है. एंड जो बॉम्ब बनता है, बिल ऑफ मटेरियल बनता है, वो बिल ऑफ मटेरियल में ऑलमोस्ट 600 to 650 आइटम्स विच आर देयर. Now, what was happening that when I took stock of midway of the first project, I saw that it is overshooting the budget. Now, you see, as a vice president, no, even if I was of operations, it was my moral responsibility to see that how can we reduce that. And then I saw that what we had estimated, उससे थोड़ा ज़्यादा आ रहा है and all that kind of stuff. I said, okay, fair enough. I started learning all the items which are there in BOM. Chuck, Wise, CAD का सॉफ्टवेयर कौन सा यूज हो रहा है, कैम का यूज हो रहा है. I took CAD CAM sessions, online sessions. I requested the master cam head of India head, and SolidWorks. They gave me online sessions. I understood the difference between master cam and solid cam. छोटी छोटी चीजें, क्योंकि दोनों का एक फ्री है और एक का $10,000 या $2,000 कॉस्ट है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है. तो आई सेड यार ये तो मजेदार चीज नहीं है. देन आई स्टार्टेड लर्निंग एंड स्टार्टेड पिचिंग. चेक क्या होता है, वाइस क्या होता है, स्पिंडल में कितना यूज होता है. मुझे जब मैं आया था तो मुझे मिलिंग और टर्निंग का भी फर्क नहीं पता था कि किसमें पीस खड़ा रहता है और किसमें पीस घूमता है. आई वाज नॉट इवन अवेयर ऑफ दैट. इन दोस फर्स्ट 4-5 months आई लर्नड एक्सटेंसिवली. मैं शॉप फ्लोर में रिक्वेस्ट करके बंदों को ले जाता था कि चलो मुझे बताओ इंजीनियर्स को कैसे यूज हो रहा है, क्या यूज कर रहे हो और क्यों यूज हो रहा है, टूल्स दिखाओ क्या है, कौन सा है, क्या होता है, पीछे कितने की वोटेज जाती है, कितने का वो यूज होता है. उसका फायदा मुझे आनंद ये मिला. नाउ आई स्टार्टेड वर्किंग स्मार्टली. बॉम्ब, जैसे मेरे को कोई बोलता था सर बॉम्ब बनाने में 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे. आई सेड नहीं यार, ये 4 आइटम तो पुराने वाले उस आइटम को उसको डाल दो और कॉस्ट कटिंग भी हो जाएगी कि हम ये वाली चीज देंगे. एंड द मैनेजमेंट स्टार्टेड सीइंग वैल्यू इन मी एज वेल कि यार ये तो आके कुछ लेके आ रहा है. इज नॉट लाइक अ टोटल कोऑर्डिनेटर टाइप बंदा नहीं. And I'm really happy to say that their faith I reciprocated. My salary was raised 3 times by the time I was there in those first year. I joined at a particular package, I left at a particular thing, which was almost 25% more than what I joined at in a first year. It is not very common. I had all the privileges in the world, traveling, everything I used to do on my own, because that's the kind of faith they started entrusting, because I was working smartly, handling those multiple projects, and at the same time, I was happy as well. Yes, sir. So first thing, learn about your profession. Learn the modern things in your profession. There are modern technologies as well as modern processes. Now, both are two different things. Then learn about all the stakeholders, internal as well as external. एक बार इनको समझना शुरू करोगे, साइकोलॉजी इज नो रॉकेट साइंस एक्चुअली. आनंद, वी ऑल आर साइकोलॉजिस्ट. अगर आपका भतीजा या छोटा कोई आता है आपके पास, चाचा मामा मेरे को ना ये समझ नहीं आ रहा, तो आप बोलोगे बेटा इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करो. बेटा आप एक एक करके मत गिनो इसको, आप 4-4 का बैच बनाओ. दैट इज स्मार्ट वर्क ना, वो तो आप भी बता सकते हो. तो जब आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है तो आप किसी और से क्यों पूछोगे, आप भी खुद वो चीज कर सकते हो. Yes, 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 sir. That's a great point
to like don't stick with just hard work, wait a second, and then analyze yourself and try to find out whether I can do that hard work through a smart way. So with that same amount of uh, time, you can do a lot more and you can create a lot more by doing that. That's very important. Thank you so much for sharing that, sir. And one more thing I would like to know, when should a person decide that now I had enough of this field, I want to learn more of field or whatever a person wants to. I do have a straight different background to a corporate. So how and at what point you decided that now I need to do this and this step, the other steps, and how you planned out the process, sir?